Welcome back everyone for Big Cricket League selection camp organized by Big Sports and 12th Khiladi. You're watching this live telecast on 12th Khiladi YouTube channel. The backbone for this Big Cricket League is some of the big names. The president of this league is Mr. R.P. Singh, Mr. Courtney Walsh from West Indies, a vice president, and Mr. Dilip Vengsarkar, former Indian batsman. Mr. Dilip Vengsarkar, league commissioner. We are into the third day and about to see a second match to start. We are on the ground in the middle of the toss. So, Cricket League is a platform that is created by Big Sports that gives you an opportunity for the upcoming players from corporate world and young amateur cricketers to play with international cricketers in their Big Cricket main league. This league is being organized so professionally well that it had three phases. The first phase was trial and physical and digital, and after completion of physical and digital trial, we are now at selection camp league matches. The first set of selection camp is already done in North India, and now we are at Bangalore for this selection camp. The players selected from this league will have an opportunity to play with international cricketers. There will be about 6 teams, or with the team consists of 18 players, and out of that 18 players, the 10 players will be from this particular league, and 2 players will be there from domestic and well-known league players, and 6 players from international cricket, that is 3 overseas players and 3 Indian players who played international cricket. So this is a great platform for these young cricketers. The more importantly, the selection process, the participants were from the age group of 18 to 49, and some of the best players are being selected here. And at Bangalore we are having this selection camp. To support this Big Cricket League, we have our partners Vega, Sports Weeks, Athletic Sports Group, Nangya Anderson, Sportsworks, Ludinos, and this match is being telecast live on 12th Khiladi YouTube channel. So we are on the third day in a second match. First match was between Team A and Team B. Team B won that match by 2 wickets. Both the teams gave excellent performance. And we are seeing here the players are stretching up, and we are waiting the toss to happen. Like as we gave update yesterday for the first test match between India and South Africa. South Africa were bowled out on 408, and India
were all down for 131, and South Africa won by an innings and 32 runs. So they lead this India South Africa series by 1-0. Since yesterday, we have seen some of the good matches here. Some of the young emerging players playing for this big cricket league. I have seen the track in the morning. It looks like a very green turf, will be helpful for fast bowlers. There is a lot of bounce on the pitch. Yesterday we saw Vishwas was taking an 8 advantage of this bounce from the pitch. Today we yet to see a pace bowler to utilize this particular pace from the bounce from this pitch.
So we are back live on 12th Khiladi YouTube channel. Big Cricket League, third day, second match between Team C and Team D. And the news from the center is Team C have won the toss and they have elected to bat first. So Big Cricket League here in Bangalore selection camp in association with our partners Sportsworks, Stanford, Vega, Spring Media, Vega, Athletic Sports Group, Ludinos, and Nanji Anderson LLP. The backbone for this big cricket league is President Mr. R.P. Singh, Vice President Mr. Courtney Walsh, and League Commissioner Mr. Dilip Vengsarkar. We are coming up with the match number 2 on day 3 between Team C and Team D. And once again, the news from the center is Team C has won the toss and they have elected to bat first. We have seen some exciting cricket yesterday and today also. The first match between Team A and Team B went very well, and Team B won by 2 wickets in just 16.5 overs to spare. So umpires are taking their place on the ground. So we are coming back to live telecast of this match on 12th Khiladi YouTube channel. We are here live from Bengaluru Nirman Cricket Ground. A great atmosphere here, quite chill. A green turf that we are seeing. A lot of grass on the wicket. The curators have done a great job. The pace bowlers getting a lot of advantage out of it. A lot of bounce in the wicket. Yesterday we saw Vishwas was taking great advantage of that bounce. And we have seen some excellent batting performance. The great partnership by Irshad Ali and Aryan Praveen. They started a bit slow and they built up their innings so well that ultimately they end up getting a winning for their team. And today we are into a second match. We will be starting in a while. So D is ready to take their positions on the field. Team C won the toss and elected to bat.
So Team D in the middle of huddle. So players are getting into center. Team D getting into their fielding positions. So we are ready to begin and ready to watch a most exciting match of this selection camp. So two batters from Team C getting into their crease. So we are all set here for the second game of the day 3 between Team C and Team D.
Excellent fielding placement. We have one slip, one short third man, deep third man, a gully point covers mid off, mid on, and square leg. So Naveen is with the new ball, and the batters Salim and Manoj Kumar. Salim is on strike and Manoj is on non-striker. Naveen is the first ball of the second match in today's date. That was excellent delivery. Caught behind a peel. Ball pitched on the off stump. Swung away. Straight into the keeper's hand. Naveen with the second ball. Again out of the off stump. Punch on the back foot. Excellent shot. Nice square cut. 4 runs. Salim opened his account with a boundary for himself as well as his team. That was a cracking shot on the back foot for 4 runs. Nicely timed shot by Salim. Naveen. Next delivery to Salim. Again on the back foot. Nicely fielded on the point. Four runs so far from this over. Salim is on strike. Face 3 deliveries. Naveen. Ball into Salim. Again trying to hit through the cover point region. Excellent fielding by at the point region fielder. Naveen showed yesterday a great bowling performance. We'll have to see how he performs today. He's in first over. 2 deliveries to go from this over. Salim on strike. Again passed on the bank foot. 1 run to Salim. Excellent fielding by deep cover region fielder. Now we are seeing some fielding change. The deep fielder coming in 30-yard circle. Manoj Kumar is on strike now. He will be facing his first delivery of this over. Naveen with his last delivery. Manoj on strike. Nicely defended. End of the over. After 1 over, score moves on to 5 runs for no loss. Just to recap, Team C has won the toss and they have elected to bat first. And Salim and Manoj Kumar, 2 opening batters, to proceed things for Team C. And that was a quite economical over, I will say. Just 5 runs from that first over. Now we have new bowler Adarsh, right arm pace, medium pace bowler, bowling over the wicket to Salim. So we are into second over of this match. Adarsh trying to set a field. Some little changes.
Now fine leg fielder coming back to short fine leg. Adarsh with the new over. Salim will face. And that was outside edge, thick outside edge. On to the third man. One run to Salim. That was thick outside edge. There could have been opportunity in the slip cordon, but there's only one slip. That ball pitched on the off stump, swung away from the batter. No attempt for any shot by the batter. Ball rests in keeper's hand. Adarsh back to his bowling mark. Adarsh. Short pitch delivery out of the off stump, way out of the off stump. White signal by umpire. After 1.2 overs, score moves on to 7. Manoj Kumar is on strike. He has faced two deliveries, yet to open his account. Adarsh to Manoj Kumar. Again the short pitch delivery way out of the off stump. White signal again. Consecutive whites. Prashant? What's his name? His name. The two good umpires, Mr. Samir and what's the name of that? And Mr. Prashant Gandhi officiating this match. That was a nice control delivery by Adarsh. So we have right now straight umpire Mr. Prakash Gandhi, and on the leg umpire we have Mr. Samir. Adarsh with the next delivery. Again pitch wide off of the off stump and called wide by umpire. Three extra deliveries, three extra wides, three extra runs in this over. Score moves on to 9 runs. Adarsh needs to get control over his line and length. Adarsh to Manoj Kumar. This time the ball pitched slightly onto the leg stump, racing into the keeper's hand. Batter had no clue. So we are into second over of this match. Adarsh bowling to Manoj Kumar. Manoj Kumar yet to open his account. Score is on 9 runs for the loss of no wicket. Playing on front foot, missing the line of the ball. No connection between bat and ball. Ball racing straight into keeper's hand. Adarsh coming up with the last delivery of this over.
We are into for power play. First 6 overs. Team C needs to take an advantage of this power play. There are only two fielders outside the 30 yards. Again, that good line delivery. There was no connection between, no timing at all between bat and ball. Trying to hit through the covers. No connection. End of the over. The score is 9 runs for the loss of no wicket. That was quite a long over, but only 4 runs from that over. So in very third over, we are seeing here a first bowling change. And Anush with the new ball, with the new over, and he will be bowling to Salim. Salim is batting on 6 runs and he has faced 6 balls so far with 1 boundary. We are seeing a quite early bowling change here. In just third over, we are seeing a new bowler, Anush. Anush to Salim. That ball pitched on the off stump, came in, wraps on pads. No clue for the batter. Excellent delivery by Anush. The score still remains on 9 runs. Anush to Salim. So Anush with the next delivery to Salim. On the front foot, excellent time shot. 4 runs for Salim. Great control shot. That ball raced away to the boundary like a bullet. No chance for any fielder whatsoever. The partnership is 13 now. That was a cracking shot that we saw. I must say that that was a shot of the day so far. Anush to Salim. Trying to make a big shot. And here is a direct hit, and we will have to wait for the signal from the umpire. Not out, says the umpire. The batsman was well in his crease. On the leg umpire, we have Mr. Prakash Gandhi. And for this over, the main umpire, Mr. Samir. So Anush with the next delivery. That was excellent running between the wicket by Manoj Kumar and Salim.
Now Anush to Manoj Kumar. Manoj Kumar yet to open his account. That was well left by Manoj Kumar. That ball was pitched out of off stump, swung away. Batsman didn't want to take any risk on that delivery, and he let that ball go into the keeper's hand. Anush with his next delivery. Oh, trying to get a big shot. No connection between bat and ball. Ball rests in the keeper's hand. So Anush with his last delivery of this over. Score moves on to 14 runs for no loss. Full toss delivery, hit over the head, covers region, ball racing to the boundary line, and that's 4 runs for Manoj Kumar. He opens his account with the boundary. End of the over. 9 runs coming off that over. Score moves on to 18 after 3 overs. So Adarsh will begin the next over. The captain is showing a lot of faith on Adarsh. And Salim will be on strike. Mohammad Salim playing on 11. He has faced 9 deliveries and 2 boundaries he has scored so far. Adarsh to Mohammad Salim. Now that ball was cut away to the gully for single. That was a nice safe shot by Mohammad Salim. 1 run added to the tally. Score moves on to 19 runs for no loss. Adarsh to Manoj Kumar. Short pitch delivery outside off stump, swung away into the keeper's hand. Batsman couldn't get any timing on that ball. Adarsh to Manoj Kumar. That ball pitched outside leg stump, wide call by umpire. One more extra run added to the tally. Score moves on to 20 runs. Adarsh is showing the great character here, trying to control his line and length. Adarsh to Manoj Kumar. On the front foot, driven away through the covers. Ball racing to the boundary line. 4 runs. Excellent shot by Manoj Kumar. 2 great shots by Manoj Kumar so far. Score moves on to 24. Manoj Kumar moves on to 8. That was a great timing on that shot and great control, great body position by Manoj Kumar there.
So Adarsh and clean ball here. Excellent delivery. That ball pitched onto middle of it, came inside. No clue for batter. He was trying to play to the onside. Wrong shot selection, and here clean bowled by Adarsh. Manoj Kumar out on score 8. Back to the pavilion. He faced 12 deliveries, 2 boundaries, trying to hit against the line. And the ball hit straight on the stumps, clean bowled. That was a great delivery by Adarsh. So we have new batter Nayan on crease. That was an excellent delivery by Adarsh. He is living up to the expectations for his captain. बोला टेबल को उधर से उधर डालो. So Adarsh, 2 balls remaining in this over. Nayan is on strike. He will be facing Adarsh, an informed bowler. So there is very low protection on the leg side. Only 2 fielders, or the 3 fielders on the leg side. Oh, that was sliced away to the gully. Nicely fielded. So Adarsh with his last delivery for his over. Nayan is on strike. That ball swung away from the batter. No shot attempted. End of the over. After 4 overs, score moves on to 24 for the loss of 1 wicket. And next updates for the match in Hindi. और यहाँ बिग क्रिकेट लीग में मैदान पर रोमांच बढ़ता हुआ. टीम सी और टीम डी के बीच ये मैच. एक छोटा सा रिकैप आप सभी के लिए. टीम सी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. 24 रन बना चुके हैं 4 ओवर में. 1 विकेट खो दिया है यहाँ पर. सलीम बैटिंग कर रहे 12 रन पर 10 गेंदों में, और नयन ने अभी तक कोई खाता नहीं खोला. और गेंद है अनुज के हाथ में. पहली ओवर में 9 रन दिए अनुज ने, काफ़ी महंगे साबित हुए. अब देखना है दूसरे ओवर में उनका प्रदर्शन कैसे रहता है. और ये लेग स्टंप के बाहर गेंद. देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है. गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, और वहां पे फील्डर को उसे कट ऑफ नहीं कर पाए, और ये 4 रन. बहुत ही बढ़िया शॉट सलीम द्वारा. यहां पर पहली गेंद पर चौका जड़ दिया है यहां पे सलीम ने. 16 रन पर पहुंच गए 11 गेंदों में. बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट है 145 का. और टीम सी 6.72 की औसत से यहां पर खेल रही है. प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पे हमें दिखाई दे रहा है 136 तक पहुंच सकते हैं अगर इसी रन रेट से खेला जाए तो. अनुज बॉलिंग करेंगे सलीम को. फ्रंट फुट पे आके इसे खेल दिया हल्के से मिड ऑन की दिशा में. 1 रन मिला यहां पर. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्लेसमेंट यहां पे
काफी प्रोटेक्शन ऑफ साइड पर, एक थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट, कवर्स, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, काफी बढ़िया प्रोटेक्शन ऑफ साइड के ऊपर, और एक स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में एक फील्डर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अनुष अगली गेंद करेंगे नयन को। नयन दो गेंदे खेल चुके हैं लेकिन खाता नहीं खुला है अभी तक। अनुष, ये बहुत अच्छी गेंद, बैक फुट पर जाने के लिए मजबूर किया यहाँ गेंदबाज ने नयन को। कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया यहाँ पर। बहुत अच्छा लाइन और लेंथ, बहुत अच्छी लंबाई रख रहे हैं अपनी गेंद में। पिच में वैसे काफी उछाल है लेकिन उसका फायदा नहीं उठा रहे बॉलर्स। काफी ग्रास है विकेट के ऊपर जिसका फायदा उठाना चाहिए तेज गेंदबाजों को। अनुष की अगली गेंद नयन को। और ये सीधे खेल दिया लेकिन मिड ऑफ के फील्डर ने आके यहाँ पे कट कर दिया है और ये डायरेक्ट हिट यहाँ पर, और ये आउट दे दिया है अंपायर ने। मोहम्मद सलीम सेट बल्लेबाज रन आउट होकर वापस पेविलियन में लौटते हुए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे मिड ऑफ फील्डर द्वारा। और मोहम्मद सलीम 17 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए, 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाए थे। और लेग अंपायर प्रकाश गांधी द्वारा आउट का निर्णय। मोहम्मद सलीम पेविलियन में वापस। नए बल्लेबाज मोहम्मद इरफान क्रीज पर। दोनों बल्लेबाज इस वक्त काफी नए क्रीज पे। नयन 4 गेंदे खेल के अभी तक खाता नहीं खोला है और मोहम्मद सलीम अपनी पहली गेंद खेलेंगे। अनुष का सामना करेंगे उनकी दूसरी ओवर में। 5वां ओवर चल रहा है, 2 गेंदे बाकी इस ओवर में। अनुष, और ये अच्छी गेंद थी लेकिन अंपायर का नो बॉल का इशारा। एक और अतिरिक्त रन टीम सी के खाते में और यहां पे मिलेगी फ्री हिट। अंपायर का नो बॉल का इशारा, फ्री हिट टीम सी के लिए। और यहां पे मिक्सअप, रन लेने की कोशिश में हा या ना, तालमेल की कमी दोनों बैटर के बीच में। और अनुष अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर और
खेल दिया है कवर्स के ऊपर से, गेंद बाउंड्री की दिशा में जाती हुई देखना है बैट्स, और यहाँ पे फील्डर कट ऑफ नहीं कर पाए। गेंद सीधे 4 रन के लिए हवा में खेल दिया था इसे कवर रीजन के ऊपर से, और ये 4 रन। ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति और मोहम्मद इरफान ने खाता खोला अपना चौके के साथ। और नया ओवर लेके आ रहे हैं आर्यन प्रवीण, बहुत ही यंग खिलाड़ी है, 17 साल के खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया करते हैं। कल बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था उन्होंने, जो आखिरी मैच खेला गया कल के दिन का, अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था और आखिर में उनकी टीम जीत गई। आज देखना है आज के दिन में उनका प्रदर्शन कैसे रहता है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया लाइन लेंथ रखते हैं, काफी उम्मीद होगी उनके कप्तान की उनसे। आर्यन प्रवीण नयन को पहली गेंद, आर्यन प्रवीण पहली गेंद नयन को, शॉर्ट पिच गेंद, इसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, हल्का सा पुल शॉट, 1 रन मिला यहां पर। नयन ने अपना खाता खोला। अब स्ट्राइक पे मोहम्मद इरफान सामना करेंगे आर्यन प्रवीण का। आर्यन प्रवीण अगली गेंद, मोहम्मद इरफान को शॉर्ट पिच डिलीवरी, हल्के से खेल दिया इसे, 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर, और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही बढ़िया कॉल मोहम्मद इरफान द्वारा, और उसे रिस्पॉन्ड किया नयन ने बहुत अच्छे तरीके से और 1 रन पूरा किया। आर्यन प्रवीण अगली गेंद लेकर अच्छा लाइन एंड लेंथ मेंटेन किया है। एक और शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, इसे वाइड करार दिया जाएगा और अंपायर का इशारा वाइड का। एक और अतिरिक्त रन, स्कोर हो गया है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आर्यन प्रवीण एक और शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बैट के बाहरी किनारे को हल्के से दूर से जाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, बैकफुट पर जाने पे मजबूर किया बैट्समैन को। अगली गेंद आर्यन प्रवीण, एक और शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, फिर से एक और वाइड, एक और अतिरिक्त गेंद करनी पड़ेगी यहां पर आर्यन प्रवीण को। पावर प्ले की आखिरी ओवर और आखिरी 3 गेंदें। अगली गेंद आर्यन प्रवीण की नयन को, और शॉर्ट पिच गेंद हल्के से पीछे आगे से खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर, बहुत ही नियंत्रण भरा शॉट नयन द्वारा, 4 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया इसे।
अच्छा नियंत्रण इस शॉट में, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। और अपनी बॉलिंग की दिशा बदलते हुए राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे नयन को। और ये एक और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा कमबैक यहां पर आर्यन प्रवीण द्वारा। मिडल एंड ऑफ पे पिच हुई, बाहर निकली विकेट कीपर के हाथ में सीधे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर अभी, अच्छा कमबैक किया यहां पे आर्यन प्रवीण ने। टीम सी का स्कोर हो गया है 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आर्यन प्रवीण अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर, और ये अच्छी गेंद, इसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, और ये चौका मिलेगा यहां पर। बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई प्रोटेक्शन नहीं इस लॉन्ग मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में। 4 रन के लिए गेंद चली गई, बहुत ही बढ़िया कंट्रोल शॉट यहां पर नयन द्वारा। 9 गेंदों में 9 रन बना चुके हैं नयन, 100 का स्ट्राइक स्पेस रेट से खेल रहे हैं। और मोहम्मद इरफान खेल रहे 5 रन बनाकर 4 गेंदों में। अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही है यहां पर मोहम्मद इरफान और नयन के बीच। 9 गेंदों में 17 रन की पार्टनरशिप। और फिर से गेंद नवीन के हाथ में। बिग क्रिकेट लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कॉरपोरेट क्रिकेटर्स और यंग क्रिकेटर्स को एक मौका दे रहा है यहाँ पे सिलेक्शन कैंप में से आगे जाने का, और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा इन्हें बिग क्रिकेट की मेन लीग में। नवीन नवीन तैयार, सामना करेंगे मोहम्मद इरफान, और इसे फिर से हवा में खेल दिया है, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन कवर डिसीजन में 1 रन मिलेगा जरूर यहां पर, और 1 रन ले लिया आसानी से। स्कोर हो गया है 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नवीन फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए डीप मिड विकेट फील्डर को थोड़ा सा और वाइड एरिया में लेके आए हैं। ऑफ साइड में काफी प्रोटेक्शन। नवीन सामना करेंगे नयन, और यहां पे हवा में खेल दिया है शॉट। देखना है क्या आता है, 6 होती है या 4, और यहां पे छक्का जड़ दिया है। यहां पे बहुत ही बढ़िया शॉट नयन की बल्ले से, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही सोचा समझा शॉट खेला है यहां पे नयन ने, बहुत ही बढ़िया बॉडी कंट्रोल, बहुत ही नियंत्रण में रखा था अपने आप को, खेल दिया सीधे 6 रन के लिए। 15 रन के निजी स्कोर पे पहुंच चुके हैं 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से। नवीन ने किसी भी तरह की उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसा एक छक्का जड़ दिया जाएगा उनकी गेंद पे। गेंद काफी अच्छी थी, जितनी अच्छी गेंद करी उतना ही अच्छा शॉट खेला नयन ने। बॉल के पिच तक आए और सीधे अच्छे से टाइम करके बॉल सीमा रेखा के बाहर भेज दी। अगली गेंद,
और यहाँ पे अब ग्राउंड शॉट खेल दिया है, एक रन जरूर मिलेगा। नयन पहुंच गए 16 रन पर। नवीन की अगली गेंद और फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, इनसाइड एज, गेंद जारी है बाउंड्री की तरफ, फाइन लेग की दिशा में, कोई फील्डर नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं वहां पर, और ये गेंद 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट मोहम्मद इरफान द्वारा। इनसाइड एज लगी थी। अरे ब्रो, और एक रन के लिए खेल दिया इसे ऑफ दिशा में। स्कोर हो गया है 59 रन। 6.5 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, आखिरी गेंद इस ओवर की। सामना करेंगे नयन। फुल टॉस गेंद, इसे खेल दिया है कवर्स दिशा में। डीप कवर रीजन में फील्डर ने अच्छे से कट ऑफ किया, वहां पर एक रन दिया। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद। स्कोर हो गया है 60 रन। 8.57 की रन रेट से स्कोर कर रहे हैं यहां पर। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पे हमें दिखाई दे रहा है, अगर इसी रन रेट से खेलते गए तो 177 रन तक पहुंच सकते हैं। 13 ओवर शेष है, और अगर 10 रन प्रति ओवर की रेट से खेलते हैं तो 200 रन का आंकड़ा पार कर सकते हैं यहाँ पे टीम सी। काफी विकेट्स हाथ में है इनके, 8 विकेट शेष। और आर्यन प्रवीण अगला ओवर लेकर आ रहे हैं। आर्यन प्रवीण अपना अगला ओवर लेकर आ रहे हैं। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए, 12 रन दिए पहले ओवर में। और ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, छोड़ दिया इसे बैट्समैन ने। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मैदान पर काफी हवा बहती हुई, काफी ठंडा वातावरण यहाँ बेंगलुरु में। जिस तरीके से हवा का बहाव है, उस तरीके से फास्ट बॉलर को मदद मिलनी चाहिए यहाँ पर। और ये ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद इस बार, और अंपायर का वाइड का इशारा। आर्यन प्रवीण नयन को, और इसे हल्के से खेल दिया कवर्स की दिशा में, 1 रन के लिए। सूझबूझ भरी बैटिंग, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। स्कोर बोर्ड को हिलता रखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप चौके और छक्के से रन बनाएं, आपको स्कोर बोर्ड हिलता रखने के लिए सिंगल्स डबल्स लेके स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ेगी। और इसे फ्रंट फुट पे खेल दिया है कवर्स की दिशा में, बहुत बढ़िया कवर ड्राइव। कट ऑफ किया जाएगा यहाँ पे फील्डर से, 2 रन जरूर मिले यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया शॉट। नयन पहुंचे हैं 18 रन के निजी स्कोर पर। मोहम्मद इरफान खेल रहे हैं 13 के निजी स्कोर पर।
आर्यन प्रवीण अपनी अगली गेंद लेकर और इसे हल्के से खेल दिया, कॉल किया था रन के लिए लेकिन नकार दिया नयन ने वहां से। बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। मोहम्मद इरफान रन चुराना चाहते थे लेकिन नयन ने वही खतरा देख लिया था और वहीं पे उन्हें नकार दिया उस रन के लिए और पुल कर दिया यहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, 1 रन मिलेगा। स्कोर हो गया है 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आर्यन प्रवीण अपनी ओवर की आखिरी गेंद, 5 रन दे चुके हैं इस ओवर में अभी तक। इस ओवर में काफी इकोनॉमिकल रहे और इसे हल्के से खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में नयन द्वारा। बहुत ही सूझबूझ भरा शॉट, गेंद को अपने आप तक आने दिया और आखिरी वक्त पे उसे हल्के से दिशा दे दी थर्ड मैन की दिशा में। ओवर की समाप्ति 8 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नयन खेल रहे 19-15 रन बनाकर, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया यहां पे उन्होंने, और मोहम्मद इरफान खेल रहे 14 रन बनाकर 2 चौकों की मदद से। और मैच का आगे का विवरण इंग्लिश में। So news from the center. Just to recap, Team C won the toss and they have elected to bat, and after completion of 8 overs, they are on 66 runs for the loss of 2 wickets. Excellent partnership is getting built up between Nayan and Mohammad Irfan of 37 of 21 deliveries. Now we have a new bowler. We have a bowling change here. Abdul Bari is with the new ball for the new over. On strike, Nayan playing on 19 runs in 15 deliveries. Abdul Bari to start a fresh over. A day 3 second match for Big Cricket League Selection Camp Bangalore. And that ball pitched way outside of stump will be called wide, and yes, it's a wide signal by umpire. Nine extras given so far by Team D. This is a good delivery from Abdul Bari. Yesterday, Abdul Bari shown a great character in his bowling. He was quite economical yesterday, and it will be interesting to see how he performs today. Now that ball pitched onto outside off stump, spun away into the keeper's hand. Now some fielding change here. Abdul Bari to Nayan on the back foot, nicely punched shot for 1 run. Score moves on to 68 runs for the loss of 2 wickets. We are into 9th over in the second match of Big Cricket League Selection Camp Bangalore. Abdul Bari with the next ball. Oh, trying to get a big shot over covers. Couldn't time that ball well. Mohammad Irfan missing on the timing. Abdul Bari to Mohammad Irfan. Now he steered away to fine leg. 1 run they have taken. Looking for 2. Excellent running between the wickets. Both the batters showing great character in their communication,
responding to each other's call very well. And two more runs added to the total. 70 runs for the loss of 2 wickets. Last ball of this over from Abdul Bari is coming up to Mohammad Irfan. Way outside of the off stump. Played to the covers. No whatsoever chance for the fielder at mid off, long off. And ball raced to the boundary for 4 runs. End of the over after completion of 9 overs. Score is 74 for the loss of 2 wickets. Mohammad Irfan moved to 20 runs in 13 deliveries and Nayan batting on 20 runs in 18 deliveries. Both the batters on same score of 20. Mohammad Irfan playing with a strike rate of 153 and Nayan playing with a strike rate of 111. We have a bowling change here. Anil Gaurav. Aryan Praveen is replaced by Ainala Gaurav. Ainala Gaurav showed the great character yesterday. He was bowling very good, very economical in yesterday's match. Now the partnership between these two is 45 runs in 27 balls. Nayan is on strike. He will be facing Anila Gaurav. It will be an interesting contest between Nayan and Anila. Both are in great form right now. And there's a great shot, nice pickup shot, but we'll have to see. Ball is in the air and first ball, Anila Gaurav has taken the wicket. Nayan trying to go for that big shot. Ball was in the air for a long time. Fielder was well underneath the ball. Nicely judged catch. And Nayan is out here. The battle between Anila Gaurav and Nayan that was expected as ended in our very first ball. Excellent delivery by Anila Gaurav here. So this match is coming live to you from 12th Khiladi YouTube channel. We have Mr. Ghanasham, our streaming operator, doing a great job since yesterday, and his team with the 4 cameramans covering this live coverage. And here on mic, myself Ravi, and we have Prakash Gandhi and Samir officiating this match as umpires. Anila Gaurav with his second delivery, a new batsman Madhusudan on crease. That was excellent delivery, pitch outside off stump, swung away straight into the keeper's hand. No chance whatsoever for the batter to get close to that ball. A wicket and a dot ball so far in this over. Full toss, driven through covers, but that will cut away by the deep cover fielder. One run added to tally. Madhusudan opened his account with that single. Mohammad Irfan is on strike.
Now can Anila Gaurav create some magic to send back Mohammad Irfan? He has already sent back the set batsman Nayan. Can he send Mohammad Irfan back? And Mohammad Irfan looks in very good control on the front foot, driven through covers. No runs on this delivery. Only one run so far out of four deliveries. The current run rate it has 7.76. Anala Gaurav to Mohammad Irfan. And nicely defended. An excellent call. Single to Mohammad Irfan. Madhusudan is on strike. He will be facing Ainala Gaurav. Last ball of this over. Excellent delivery. Batsman had no clue passing that ball very close to the bat. End of the over. Excellent over by Anala Gaurav. Only two runs from that over and one wicket. He was successful in breaking that partnership between Nayan and Mohammad Irfan. The score is on 76 for 3 in 10 overs. In the first inning, we are halfway down in the first innings. Abdul Bari is the next bowler, and Mohammad Irfan is on strike. Abdul Bari to Mohammad Irfan. On to the back foot, punched away through the cover region for one run. He moves on to 22. Madhusudan is on strike. Abdul Wari was quite expensive in his first over. He gave away 9 runs in that over. And outside edge. No fielder on that sleep cordon. Could have been a catch. And sliced away through the covers. The log of fielder will cut off that. One more run added. Madhusudan playing a good role here. He is rotating the strike. He's trying to give more strike to Mohammad Irfan. As Mohammad Irfan is trying to play some good shots, some big shots he's trying to play. So Madhusudan is rotating strike very well, and this time tried to cut away through the point region, but nicely fielded at the backward point. And 2 runs so far from this over of Abdul Bari. Score moves on to 78 runs for the loss of 3 wickets. That was an excellent delivery. Pitched on middle and off. Spun away straight to the keeper's hand. That ball was very close to the bat. And now last ball of this over. Nicely defended by Mohammad Irfan. End of the over. At the end of 11 overs, score is 78 runs for the loss of 3 wickets. The current run rate is 7.09 runs per over. The projected score at the same run rate will be 141. If they manage to add another 90 runs to this, they can cross 150 run mark or the 175 run mark.
sorry, they can cross 160 run mark if they can score 10 runs per over from here on. Anila Gaurav with the new over, and LBW appeal, and is given out. That ball pitched on the off stump, came inside, wrapped on pad, caught in front of the wicket. Madhusudan out LBW on the score of 2 runs. And here Anila Gaurav claiming his second wicket. He has taken the wicket on his first delivery in the last over. In his first over, he took the first wicket on his first delivery. Out LBW. Madhusudan out. The team C has lost their fourth wicket on the score of 78. That was excellent bowling by Anila Gaurav. New batter in at the crease, Devik Nayak. It will be interesting to see the partnership between Mohammad Irfan and Devik Nayak. They have all the capacity to build a good partnership in the remaining 9 overs. Both the batters can take through their team till the end. But Anila Gaurav is at the peak of his form. He has taken both the wickets on his first ball of the respective over. In the previous over, he took a wicket on the very first ball, and in this over, he took his second wicket on the very first ball. Devik Nayak on strike. He will face Anila Gaurav. Anila Gaurav is in a great form right now. 1.1 over, no better than 2 runs and 2 wickets. That's a great delivery, and that was an excellent call by Devik Nayak, and Mohammad Irfan was pretty late to respond to him. The Devik Nayak was almost halfway down the pitch, and they managed to complete that run, and Mohammad Irfan is on strike now. Anila Gaurav making some fielding changes. The short fine leg fielder moving towards deep fine leg. There is a long on,
deep mid wicket and a fine leg. Three people on the leg side, four people on the leg side, and that ball down the leg side. White call by umpire. So we have four people on the leg side, long on, mid wicket, deep square leg, and fine leg. Anala Gaurav to Mohammad Irfan. Short pitch delivery. That surprise for Mohammad Irfan. That delivery surprises Mohammad Irfan with the bounce. Ultimately, Anala Gaurav trying to pitch that ball short, get that bounce from the pitch. Using that extra bounce here on, it will help Anala Gaurav. Oh, that ball pitched way outside off stump. White signal by umpire. Score moves on to 81 runs for the loss of 4 wickets. Mohammad Irfan batting on 22 in 20 deliveries. Anala Gaurav trying to generate that extra pace and extra bounce from the pitch. That was nicely steered away to third man by Mohammad Irfan for single. So the last ball coming up for this over from Anala Gaurav. Devik Naik on strike. Left-handed batter. Last ball coming up for this over from Gaurav to Devik Naik. And flicked away to deep mid wicket. Ball receiving the boundary, cut away by the fielder. 2 runs easily taken. So last ball coming up here from Gaurav. And that's called wide by umpire. That ball was way down the leg side. 7 runs coming from this over. 3 white balls by Anala Gaurav. Bowling ground the wicket to Devik Nayak. Again down the leg side. We'll have to wait for the signal from the umpire. Looks like there is a warning given by umpire to Anala Gaurav for walking on the pitch. A bowler must take care of his follow through and not walking on the sensitive pitch area. The new bowler is Samarth. There is a bowling change now. End of 12 overs. Score is 85 for 4 runs. Now the next update for this match in Hindi. और फिर से स्वागत है आपका यहाँ पे निर्माण क्रिकेट स्टेडियम, निर्माण क्रिकेट ग्राउंड बेंगलुरु में। और इसे हल्के से खेल दिया मोहम्मद इरफान ने।
माफ कीजिए, क्रिक बिस ग्राउंड पे आपका सभी का फिर से स्वागत। बेंगलुरु में बिग क्रिकेट लीग का सिलेक्शन कैंप लीग मैचेस तीसरे दिन का दूसरा मैच चल रहा है और यहाँ पे कॉट बिहाइंड आउट दे दिया अंपायर ने। यहाँ पर मोहम्मद इरफान आउट हो गए। समर्थ की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप पे गेंद किया, स्क्वायर कट करना चाहते थे, बैट का बाहर किनारा लगा और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तान में जाके बैठ गई। बहुत ही बढ़िया विकेट यहाँ पर समर्थ द्वारा। मोहम्मद इरफान 23 रन बनाकर आउट 23 गेंदों में, 100 का स्ट्राइक रेट। 3 चौके जड़ दिए उन्होंने इस अपनी 23 रन की पारी में। पांचवी विकेट का पतन, स्कोर है 85 रन 12.2 ओवर के बाद। और अब आए हैं मोहम्मद इरशाद अली, सामना करेंगे समर्थ का। समर्थ अपनी दूसरी गेंद पर सफलता पाने में कामयाब। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। मोहम्मद इरशाद अली सामना करेंगे समर्थ का और हल्के से खेल दिया इसे पॉइंट और गली के बीच में से। गेंद बाउंड्री में जाती हुई, देखना है चौका होता है क्या होता है। और यहां पे अंपायर का 4 रन का इशारा। बहुत ही बढ़िया शॉट, चौके से खाता खोला अपना मोहम्मद इरशाद अली ने। कल की मैच का अपना फॉर्म बरकरार रखते हुए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी थी उन्होंने कल के आखिरी दिन के मैच में। 30 रन से भी ज्यादा रन बनाए थे उन्होंने। स्कोर हो गया है 89 रन्स 5 विकेट के नुकसान पर। हल्के से खेला इसे पॉइंट की दिशा में और कोई रन नहीं यहां पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 4 रन आ चुके हैं इस ओवर में। शॉर्ट पिच गेंद उसे हल्के से खेल दिया थर्ड रन की दिशा में, लेकिन वहां पे आदर्श द्वारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। कोई रन लेने का मौका नहीं दिया यहां पर। समर्थ इरशाद अली को बॉलिंग और फिश फील्ड यहां पर पॉइंट रीजन में 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ सकते, नहीं दौड़ सकते। बहुत ही बढ़िया थ्रो वहां पे आदर्श द्वारा। और ओवर की समाप्ति 13 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर। इरशाद अली 5 रन पर खेल रहे 4 गेंदों में और दैविक नायक खेल रहे 3 रन पे 3 गेंदों में। बॉलिंग में फिर से परिवर्तन। गेंद अब्दुल रहमान के हाथ में। सामना करेंगे इरशाद अली। स्कोर हो गया है 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 6.92 का औसत। और यहाँ पे प्रोजेक्टेड स्कोर अगर हम देख सकते हैं तो 140 रन तक पहुंच सकते हैं अगर इसी रन रेट से खेला जाए। और इसे हल्के से खेल दिया है कवर्स की दिशा में। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बढ़िया कॉलिंग। और अब स्ट्राइक पे दैविक नायक, काफी आक्रामक बल्लेबाज है। बहुत ही बढ़िया चक्के चौके जानते हैं।
अभी अपने लय में आए नहीं है। और ये शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का। एक और अतिरिक्त रन टीम सी के खाते में। और इसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में देविक नायक ने। एक रन मिला। अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप लॉन्ग ऑन पर। बाउंड्री लाइन पर काफी प्रोटेक्शन दिया है कप्तान ने। सिर्फ 4 फील्डर दायरे के अंदर। और ये अच्छी गेंद, इसे खेल दिया स्क्वायर लेग पे। अच्छी फील्डिंग और यहां पर एक रन मिला। स्कोर हो गया 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और बड़ा शॉट खेले की कोशिश, बाहरी किनारा, गेंद थर्ड मैन की दिशा में। और ये ओवरथ्रो रन मिल सकते हैं, लेकिन कोई मौका नहीं यहां पर ओवरथ्रो का। 2 रन मिले यहां पर दैविक नायक को। छियानवे पे पहुंच गया है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अब्दुल रहमान गेंदबाजी कर रहे दैविक नायक को। ये अच्छी गेंद, इसे हल्के से खेला, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अब्दुल रहमान अपने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए दैविक नायक को। और सीधे खेल दिया दैविक ने। बढ़िया शॉट और इतनी बढ़िया फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर आदर्श द्वारा। सिर्फ एक रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति यहां पे 14 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 97 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और समर्थ कंटिन्यू करेंगे अपनी दूसरी ओवर के साथ। स्ट्राइक पे है दैविक नायक, बाएं हाथ के बल्लेबाज। काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। 7 रन बना चुके हैं अब 7 गेंदों में, 100 का स्ट्राइक रेट। गार्ड लेने की थोड़ी स्टाइल चंद्रपॉल जैसी है। बेल्स को निकाल के बेल्स से मार्किंग करा के लेते हैं दैविक नायक। और समर्थ नए ओवर की पहली गेंद। ये बहुत ही बढ़िया गेंद, चकमा दिया गेंद ने बैटर को भी और विकेट कीपर को भी। गेंद बाउंड्री लाइन पे जाती हुई वहां पे उसे कट ऑफ किया और 22 के रूप में 2 रन मिले यहां पर टीम सी को। स्कोर पहुंच गया है 99 रन 5 विकेट के नुकसान पे। समर्थ की अगली गेंद दैविक को।
समर्थ देविक नायक को अगली गेंद, हल्की सी शॉर्ट पिच रही और यहाँ पे से खेल दिया कवर्स की दिशा में 1 रन के लिए। दूसरे रन की तलाश में थे देविक, अरशाद अली ने उन्हें नकार दिया और यहाँ पे 100 रन पूरे टीम सी के लिए 14.2 ओवर में। समर्थ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे इरफान अली को और बैक पे अच्छे से खेला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहाँ पॉइंट रीजन में, और एक और डॉट बॉल। और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, चकमा खा गए फिर से, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई और यहाँ पे अंपायर का 4 रन का इशारा। ये एक इनसाइड एज थी, कीपर से गलती हुई, कैच नहीं पकड़ पाए और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाहरी किनारा लिया बल्ले का, गेंद काफी तेज थी, कीपर को चकमा देके सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और बैकफुट पे आके इसे मिड विकेट की दिशा में खेल दिया, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की तलाश में इरशाद अली और इस बार देविक नायक ने मना कर दिया दूसरे रन के लिए और अब तक 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में। स्कोर हो गया 105 पे 5 विकेट। समर्थ अपने दूसरे ओवर में काफ़ी अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं, 5.5 रन के प्रति उनका इकोनॉमी इस वक्त, और इसे हल्के से खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में। कोई प्रोटेक्शन नहीं वहां पर, 2 रन मिलेंगे यहाँ पर, तीसरे रन की तलाश कर सकते हैं और 2 रन से स्कोर हो गया है 107 रन। नायक खेल रहे 10 रन पर 10 गेंदों में और इरशाद अली 12 रन पर खेल रहे 9 गेंदों में। 15 ओवर की समाप्ति। बाईस रन की पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के बीच 16 गेंदों में। छोटी छोटी पार्टनरशिप्स देखने मिली है हमें यहाँ पर आज। और अब गेंद आदर्श के हाथ में। और ये बहुत ही बढ़िया क्विक रन लिया है यहाँ पर, माफ कीजिए अब्दुल रहमान अपना दूसरा ओवर कर रहे। पहली गेंद पर 1 रन मिला इरशाद अली को। देविक नायक अब स्ट्राइक पर। अब्दुल रहमान अगली गेंद, देविक नायक को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग नहीं कर पाए ठीक से, गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और सीधे बॉलर के पास जाके रुक गई। मोहम्मद इरफ और इसे हल्का सा बाहर आए ऑफ स्टंप की तरफ और यहाँ पे 4 रन, बाउंड्री का इशारा अंपायर द्वारा। देविक नायक का बहुत ही बढ़िया शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर, फाइन लेग के ऊपर से।
स्कोर पहुंच गया 112 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देविक नायक खेल रहे 14 रन बनाकर 12 गेंदों में। शॉर्ट पिच गेंद बाहरी किनारा लिया, थर्ड मैन की तरफ जाती हुई गेंद और वहां फील्डर मौजूद। 1 रन का इजाफा यहां पर 113 रन पे पहुंच गया है स्कोर और देविक नायक पहुंच गए अपने 15 रन के निजी स्कोर पर। 6 रन आ चुके हैं इस ओवर में। और शॉर्ट पिच गेंद, उसे वेट किया गेंद को अपने आप तक आने के लिए, पुल कर दिया वहां पर। 2 रन ले लिए यहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से। बैट्समैन को ये सूझबूझ दिखानी पड़ेगी। शॉर्ट पिच गेंद थी, इंतजार किया गेंद का, जैसे ही गेंद अपने दायरे में आई उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में और यहां पे मिडिल स्टंप पे पिच हुई और लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पैड पे लगी। अंपायर का नॉट आउट का इशारा। ओवर की समाप्ति। 16 ओवर के बाद स्कोर हो गया 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देविक नायक खेल रहे 15 रन पर 13 गेंदों में और इरशाद अली खेल रहे 15 रन पर 12 गेंदों में। दोनों के बीच 30 रन की साझेदारी 22 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड करी है 30 रनों की 22 गेंदों में देविक नायक और मोहम्मद इरशाद अली ने। 17वां ओवर शुरू कर रहे हैं। और नए गेंदबाज मोहम्मद फहीम। फिर से बॉलिंग चेंज देखने मिल रहा है हमें यहां पर। सामना करेंगे देविक नायक। और यहां पे सीधे खेल दिया है और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 4 रन, कम से कम 2 रन बचाए यहां पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अनुज द्वारा। ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा पार कर जाएगी, लेकिन अनुज की बहुत ही बड़ी सूझबूझ और वहां पे रोक दिया उसे। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए और यहां पे फिर से 2 रन देविक नायक को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। स्कोर हो गया 119 5 विकेट के नुकसान पर। 7.29 की औसत। उन्नीस रन के निजी स्कोर पर खेल रहे देविक। मोहम्मद इरफान, अगली गेंद देविक नायक को और बैकफुट पे जाकर उसे हल्के से खेलना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में। टाइम नहीं कर पाए गेंद को। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में। आगे आगे खेल दिया इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में और यहां पे 1 ही रन मिलेगा सिर्फ। वो अजहर भाई, मोहम्मद इरफान, अगली गेंद। सामना करेंगे इरशाद अली और हल्के से आगे खेली कोशिश की लेकिन बॉटम एज लगी यहां पर और ये डायरेक्ट हिट। देखना है अंपायर का डिसीजन क्या आता है। बैट्समैन पहुंच गए थे क्रीज में अपनी।
नॉट आउट का इशारा, काफी रिस्की रन लिया था। और 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 6 रन दे चुके हैं अभी तक। एक रन आउट का मौका, लेकिन नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। और यहाँ जो डायरेक्ट थ्रो हुआ था, यहाँ पे स्टंप शायद टूट गया है। ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ 121 रन हो गए हैं 5 विकेट के नुकसान पे, 7.19 की औसत। और प्रोजेक्टेड स्कोर अगर 7.19 की औसत से खेला जाए तो 142 रन तक पहुंच सकते हैं अपने 20 ओवर के कोटा में। और यहाँ पर जो डायरेक्ट हिट लगी थी उसे थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया गया है। देखना है आउट है या नहीं। और थर्ड अंपायर का रन आउट के डिसीजन के लिए नॉट आउट का इशारा। अच्छा कॉल किया था देविक नायक ने, इरशाद अली ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया उसे। बैटिंग साइड के स्टंप के पीछे के जो कॉल्स होते हैं वो नॉन स्ट्राइकर को करना होता है, और बहुत ही बढ़िया कॉल किया यहाँ पे देविक नायक ने। और ऑफ स्टंप पे काफी बाहर गेंद, वाइड की मांग कर रहे थे यहाँ पे देविक नायक, लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं। ओवर की समाप्ति, 17 ओवर के बाद स्कोर हो गया 121 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद इरशाद अली खेल रहे 16 रन बनाकर 13 गेंदों में, और देविक नायक खेल रहे 20 रन 18 गेंदों में। और मैच का अगला विवरण इंग्लिश में। So the story from the center right now is score is 121 for the loss of 5 wickets. Mohammad Irshad Ali and Devik Nayak, they are built a partnership of 36 runs from 28 deliveries, 16 runs from Irshad Ali and 20 runs Devik Nayak. New bowler Adarsh with his third over and played nicely to the mid wicket for 4 runs. There is no chance at all for any fielder to take that, to field that ball. Excellent shot, very controlled shot by Irshad Ali.
4 runs of the very first ball of the 18th over. Trying, Adarsh is trying to make some field changes. Adarsh to Irshad Ali. Played straight down the ground. Cut away by the fielder at long off. 2 runs to Irshad Ali. Nice control straight shot. Ball was in the air for some time. Score moves on to 127 of 5 runs. Adarsh to Irshad Ali again. And that was cut away. Nicely fielded at backward point. So the projected score looks like 140 plus. Adarsh in the next delivery. Pulled on the slightly out of the off stump. Swing away and rested into keeper's hand. Batsman couldn't reach to that delivery. The footwork is very important, and there was no footwork at all from Irshad Ali this time. 6 runs so far from this over. And he moved a bit, and there was opportunity for catch, but fielder trying to catch it with a single hand, and it's a catch drop here, and a life for Irshad Ali. 2 more runs to Kitty to Irshad, and score moves on to 129. Adarsh coming up with the last delivery of his over. Oh, that was excellent delivery by Adarsh. He couldn't time the ball well. Now at the end of 18 overs, the score moves on to 129 for 5. Tevik Nayak on 20, Irshad Ali on 24. The partnership between both of them is 44 runs in 34 deliveries. 8 runs coming off from that last over. So you have one more bowling change. Anush is back for his third over. Very expensive in his first spell. In 2 overs of his first spell, he gave away 19 runs. Anush bowling to Devik Nayak. Or trying to pull away. No timing at all. Misses the shot. No runs. Anush to Devik Nayak. Second delivery of this 19th over. Oh, ball is in the air. Over mid wicket. They're going for 2 runs. And they will get 2. Excellent running by both the batters. Score moves on to 131.
Anush to Devik Nayak, way outside leg stump, and this will be called wide. And yes, certainly that was wide, signaled by umpire. Score moves on to 132. Anush to Devik Nayak. Devik Nayak batting on 22. Coming down the pitch, ball is in the air. We'll need to check, and here his catch dropped again. That was an easy catch on the boundary line. 2 runs to Devik Nayak. He moves on to 24. Score moves on to 134 for 5 runs. That ball was in the air for a quite long time. The fielder had all the time to get under the ball. At the last moment, he takes eyes of the ball and the catch is dropped. Anush to Devik. Oh, trying out of the off stump delivery, waiting for umpire signal for the wide. Umpire is not interested. So 5 runs so far from this over, and score is on 134 for 5. The current rate is 7.18. Oh, there's a short pitch delivery. A bouncer signal by umpire is allowed, one bouncer for bowler for per batsman. Now Anush with his last delivery of this over. Both the batters are on 24. Last delivery by Anush to Devik Nayak. Full toss, hit to the line for single, and 1 run added to the tally. Score moves on to 135, and we are into last over of this first inning. It will be interesting to see who's going to bowl that last over. 9 bowlers have been used by 9 bowlers are being used here by captain of team D. We are into the last over, and Naveen coming up with the third over of his quota and last over of this first inning. Score is on 135. It will be interesting to see what will be the approach of Devik Nayak in this last over. Both the batters have completed a partnership of 50 runs in 40 deliveries. Magnificent inning by both the batters. 50-run partnership completed. Naveen to Devik Nayak. And that ball pitched way outside off stump and called wide by umpire Mr. Prakash Gandhi.
Score moves on to 136. Dancing down the wicket, no timing at all, no connection between bat and ball. Managed to get one run, a misfield by even a wicket keeper. The left hand right hand combination from last 41 deliveries and 52 is a partnership between both of these guys, Irshad Ali and Devik Nayak. Both of them continuing with the great form of yesterday. Naveen with the last over. And it's interesting to see that all the fielders are on the boundary line here. So after 2.2 overs, Naveen has given 22 runs. Very expensive bowler he had turned out to be for Team D. Score moves on to 138 for the loss of 5 wickets. Naveen to Devik. Devik on strike. And that called wide by umpire. Way outside of the off stump. And that was hit to the long on. And 2 runs easily taken by Devik. Excellent running between the wickets by Irshad Ali and Devik Nayak here. Score moves on to 141. 3 balls remaining in this inning. Irshad moves on to 25. Devik moves on to 28. Naveen to Devik Nayak. Again hits the line. Driven to long off and 1 run. Score moves on to 142. And last 2 deliveries of this inning. On strike Irshad Ali. Naveen to Irshad Ali. Trying to get a big shot. No timing at all. No connection. That ball kept very low. We have seen some odd bounce and now the ball kept very low this time. So Naveen coming up with his last delivery of this first inning of a second match. Full toss delivery. Nice shot for 4 runs. Now umpire wants to check the no ball for the height. The waist high no ball.
पीछे जा रहे तुम. So we are waiting for the umpire signal for the no ball check. और यहाँ पे 6 रन का इशारा अंपायर द्वारा. और 20 ओवर के बाद स्कोर हो गया 148. जीत के लिए चाहिए 139 रन 20 ओवर में टीम डी को.
और इनिंग्स ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका बिग क्रिकेट लीग मैच में। टीम डी को जीत के लिए चाहिए 149 रन 20 ओवर में। बहुत ही बढ़िया आयोजन यहाँ बिग स्पोर्ट्स और 12th खिलाड़ी द्वारा बिग क्रिकेट लीग सिलेक्शन कैंप में। एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पर कॉरपोरेट जगत से क्रिकेट खिलाड़ियों को और यंग इमर्जिंग प्लेयर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे उन्हें बिग क्रिकेट लीग के मेन लीग में खेलने का मौका मिलेगा इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ। एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म और इस लीग के पीछे जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है उसमें सबसे बड़े नाम यहाँ पे आरपी सिंह जो प्रेसिडेंट है, कर्टनी वॉल्श वाइस प्रेसिडेंट है और लीग कमिश्नर है श्री दिलीप वेंगसरकर जी। और यहाँ पे हमारे साथ पार्टनर्स है एथलेटिक स्पोर्ट्स ग्रुप, स्टैनफोर्ड स्पोर्ट्स वर्क्स, वेगा, ल्यूडिनोस और नांगिया एंडरसन एलएलपी और वेगा। सो यहाँ पे दूसरे इनिंग का खेल शुरू होते हुए और दूसरी गेंद यहाँ पे बहुत ही हल्के से खेल दिया था। यहाँ पर एक रन लिया था लेकिन ओवरथ्रो के रूप में दूसरा रन मिला है यहाँ पर। और क्रीज पे है लोकेश्वरन और समर्थ। और ये तीसरी गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी। यहाँ पर हल्के से ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और बाहर निकली सीधे कीपर के हाथ में। बैट्समैन को कोई मौका नहीं यहाँ पे स्ट्रोक का। बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया यहाँ पर गेंदबाज ने। लोकेश्वरन स्ट्राइक पे है, समर्थ नॉन स्ट्राइकर। गेंद विश्वास के हाथ में और इसे
पुल कर दिया यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, और ये 4 रन यहाँ पर, 4 रन, 4 रन का इशारा, चौके का इशारा यहाँ पे। और यहाँ पे विश्वास अपना पहला ओवर, कल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी थी उन्होंने। पिच का बहुत फायदा उठाया था, पिच में जो उछाल था उसका पूरा फायदा उठाया था कल इन्होंने। अगली गेंद और इसे हवा में खेल दिया है, पॉइंट दिशा के ऊपर से गेंद बाउंड्री को जाती हुई, और वहां पे रोक दिया है उस गेंद को, और फिर से 2 रन मिले यहां पर। पहली ओवर में 9 रन बना चुके हैं टीम डी। 149 रनों का लक्ष्य 20 ओवर में। विश्वास अपनी अगली गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं, सामना करेंगे लोकेश रन, और उसे स्क्वायर कट करने की कोशिश, गेंद तक पहुंच नहीं पाए, कोई फुटवर्क नहीं था यहां पर उनके, यहां से गेंद तक पहुंच नहीं पाए, इसके लिए गेंद को टाइम भी नहीं कर पाए, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 9 रन। नए गेंदबाज गणेश अपना पहला और टीम का दूसरा ओवर शुरू करते हुए, सामना करेंगे समर्थ। और ये लेग स्टंप पर पिच हुई गेंद अंदर आती हुई, उसे हल्के से खेल दिया, रक्षात्मक तरीके का स्ट्रोक यहां पर। गणेश दूसरी गेंद समर्थ को, और इसे हल्के से खेल दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिशा दिखाई यहां पे गेंद को, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े यहां पर, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बढ़िया कॉलिंग समर्थ द्वारा, बहुत अच्छी सूझबूझ दिखाई यहां पे। पहला रन थोड़ा तेजी से ले लिया था, और जैसे ही देखा कि दूसरे रन का मौका मिल सकता है तो वैसे ही दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और दूसरा रन भी पूरा कर लिया यहां पर। गणेश बॉलिंग करेंगे समर्थ को, और ये समर्थ का बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप में खेल दिया इसे, गेंद सीधे बाउंड्री की दिशा में, और 4 रन। बहुत ही कॉन्फिडेंट शॉट यहां पर समर्थ द्वारा, बहुत पहले ही पिकअप कर लिया था इस गेंद को, बहुत अच्छी तरीके से कवर ड्राइव खेला यहां पे, 4 रन के लिए।
बहुत ही आक्रामक तरीका अपनाया है समर्थ ने दूसरे ही ओवर में इस मैच के। और फिर से हवा में खेल दिया है, कोई फील्डर नहीं वहां पे, गेंद बाउंड्री तो जाती हुई देखना है वहां पे रोक पाते या नहीं, और यहां पे गेंद को रोक दिया है और 2 रन मिले फिर से। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर समर्थ द्वारा। उनका स्कोर हो गया है 9 रन, 5 गेंदों का सामना किया है। और लोकेश्वरन खेल रहे 8 रन बनाकर, उन्होंने भी 5 गेंदों का सामना किया है। स्कोर पहुंच गया है 17 रन पर। गणेश अगली गेंद लेकर आ रहे हैं समर्थ के लिए, और एक बहुत ही बढ़िया गेंद मिडिल ऑफ पे पिच हुई, बाहर निकली सीधे विकेट कीपर के हाथ में। दो शॉट आगे आकर खेलने के बाद विकेट कीपर स्टंप्स के नजदीक। और इसे बैकफुट पे खेल दिया, पंच किया हल्के से, कोई रन नहीं यहां पर। ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 17 रन 2 ओवर के बाद। 8 रन आए इस पिछले ओवर से। एक 132 रनों की जरूरत 108 गेंदों में। और नए गेंदबाज विश्वास अपना नया ओवर लेके आ रहे हैं। पहले ओवर में थोड़े पहले ओवर में 9 रन दिए उन्होंने। अब अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, सामना करेंगे लोकेश्वरन। और फ्रंट फुट पे एक बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव, गैप में सीधे 4 रन के लिए। किसी फील्डर को कोई मौका नहीं यहाँ पर। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन का इशारा अंपायर का। बहुत ही बढ़िया शॉट, पहले ही रन बॉल पे चौके के साथ शुरुआत करी है ओवर की। स्कोर पहुंच गया 21 रन। लोकेश्वरन पहुंच गए हैं 12 रन पे। 6 गेंदों में 200 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे दोनों बल्लेबाज सोच के आए हैं कि आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे। विश्वास अगली गेंद लोकेश्वरन को, ये शॉर्ट पिच गेंद, और यहां पे अंपायर का नो बॉल का इशारा। और फ्री हिट लोकेश्वरन के लिए। अब देखना है कि फ्री हिट का कैसे फायदा उठाते हैं यहां पे लोकेश। एक छोटा सा रिकैप आप सभी के लिए, टीम सी और टीम डी के बीच ये मैच। टीम सी ने पहले टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, 148 रन बनाए 20 ओवर में, और लक्ष्य रखा 149 रन का टीम डी के लिए। और ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश फ्री हिट पे, टाइम नहीं कर पाए, इस गेंद को मिस किया और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में गई। कल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी थी विश्वास ने, पिच का पूरा फायदा उठाया था। अगली गेंद विश्वास की लोकेश्वरन के लिए, शॉर्ट पिच गेंद, फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई। और अगर आपको गेंद तक पहुंचना है तो आपको फुटवर्क करना पड़ेगा। अगर आपका फुटवर्क कमजोर है तो आप गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे और आप कोई भी बड़ा शॉट अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। विश्वास की अगली गेंद, और इसे हल्के से खेल दिया, कोई रन नहीं यहां पर।
और विश्वास अपनी अगली गेंद लेकर लोकेश्वरन के लिए। और फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। गेंद के पिच तक पहुंच नहीं पा रहे हैं लोकेश्वरन। जहां खड़े हैं वहीं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप जा रही है। गेंद तक पहुंचना पड़ेगा अगर बड़ा शॉट खेलना है तो। विश्वास अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं लोकेश्वरन के लिए। और और यहां पर देखना है, और ये कॉट बिहाइंड, बाहरी किनारा लिया बल्ले का और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में। विश्वास ने सफलता पाई है यहां पर। पहली विकेट का पतन लोकेश्वरन के रूप में। 22 रन पर एक विकेट। लोकेश्वरन 22 रन बनाकर पेविलियन वापस जाते हुए, दो चौकों की मदद से 22 रन बनाए उन्होंने। और यहां वापस जाते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति हुई। आखिरी गेंद पर विकेट लिया यहां पे लोकेश विश्वास ने। 22 रन पे एक विकेट। और, और गणेश अपनी दूसरी ओवर के साथ। और तीसरे ओवर की पहली गेंद गणेश द्वारा, बहुत अच्छी गेंद। नए बल्लेबाज आर्यन प्रवीण। और यहां पे फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ डीप मिड विकेट का फील्डर मिड ऑन की दिशा में आते हुए गणेश अगली गेंद समर्थ को करेंगे। और इसे हल्के से खेल दिया। एक रन मिलेगा यहां पर। रन चुराना चाहते थे और ये रन चुरा लिया यहां पर उन्होंने। दो गेंदों के बाद एक रन आया यहाँ पे। और ये आर्यन प्रवीण अब स्ट्राइक पर। कल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी थी उन्होंने। अपनी टीम को जीत के दहलीज तक लाके रख दिया था उन्होंने। गणेश आर्यन प्रवीण को, और अच्छे से खेल दिया। हल्के से खेला यहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में और एक रन खाता खोला अपना। एक रन के साथ स्कोर हो गया है 24 रन।
और यहाँ पे एक और बार हल्के से खेल दिया समर्थ ने पॉइंट और गली की दिशा में, और 2 रन लिए यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों के बीच। स्कोर पहुंच गया है 26 रन पे। गणेश अगली गेंद समर्थ को, और इसे फिर से हल्के से खेलने की कोशिश करी। गेंद जाके गली फील्डर के हाथ में सीधे। कोई रन नहीं यहाँ पर मिला। 6.78 की औसत से खेल रहे हैं और रिक्वायर्ड रन रेट है 7.61। 123 और रनों की जरूरत 97 गेंदों में, और इसे छोड़ दिया। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर द्वारा। 4 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 26 रन, और आंखों देखा हाल इसके आगे सुनेंगे आप इंग्लिश में। So just the small recap for all you guys. Team C scored 148 runs and 149 is a target for Team D. And so far they have scored 26 runs for the loss of 1 wicket in 4 overs. Aryan Praveen is batting on 1 and Samarth is batting on 12. We have a bowling change here. Aditya is will start the proceedings for the 5th over. Team D is not able to capitalize on power play right now. Only 26 runs in 4 overs. The, this ball was way out of the leg stump, and a fight called by an umpire. If Team C wants to win this match, they need to keep a control on their extras. No white balls, no balls, no extra deliveries to be offered to Team D. And they need to keep an eye on Aryan Praveen, that how they can get this Aryan Praveen wicket, because he exactly knows how to build his innings. And that was an excellent shot on the back foot for 4 runs through the covers. As I was just saying, that Aryan Praveen, he's just a 17-year-old guy, and he exactly knows how to build his innings. Yesterday, when he was batting on 0 and he faced 6 balls. He didn't even open his account, and then after that, he was batting on the strike rate of 110, and he actually took his team to the doors of victory. Today it will be interesting to see what will be approach of Aryan Praveen here. Score moves on to 31 runs for the loss of 1 wicket. Aditya to Aryan. That was nice shot and nicely cut away on the point region. Only single to Aryan Praveen and to his team. Score moves on to 32. Aditya with his next delivery to Samarth. And it was sliced away through the gully region, and one more run added to the tally. And one more run to Samarth's account. He moves on to 15 runs. After first boundary, they are not taking any risk. They are just looking for ones and twos and rotate the strike.
So that's the strategy, that get one big shot and then rest of the over go for singles or doubles and rotate the strike. And this time again sliced away to the point region for one run. So 10 runs so far from the over. Score moves on to 36 for 1. Aditya in his first over gave away 10 runs so far. Quite expensive over for Team C. Down the leg side, we'll have to wait for the signal from the umpire. That's called wide and 4 runs. So 5 runs added to Team C. Score moves on to 41 for the loss of 1 wicket. One more ball to go in this over. 15 runs coming off that over and still one more ball to go in this over. Aditya to Samarth. That was nicely placed shot. No runs. End of the over. After 5 overs, score is 41. Team D needs 108 runs from 90 deliveries. Just about 7.20 runs per over required. The last over, they got 16 runs from it. So they are back into their power play required run rate. Now they are batting at 8.20 runs per over and required run rate is 7.20. The new bowler is Ganesh with his third over and nicely steered away to third man for single. So score moves on to 48-42 for the loss of 1 wicket. Ganesh bowling to Samarth and trying to hit a big shot but not able to time it very well. Mid off fielder cuts off and no runs. Ganesh to Samarth. And that's a cracking shot by Samarth. He even didn't move for any run. He knew exactly the ball will go to the boundary line and 4 run signal by umpire. He moves on to 19 and score moves on to 46. 103 more runs required in 87 deliveries now. Ganesh to Samarth. Getting into the pitch to the ball. That was a nice shot, but in covers region, there was a great fielding. No runs given on this ball. 5 runs so far from this over. Ganesh bowling to Samarth. Wrapped pads, appeal for LBW, and surely that ball was missing leg stump.
Ganesh with his last delivery of his over, and that was sliced away softly for single. Samarth will retain the strike. Sorry, Aryan will retain the strike. Score moves on to 48. Just about 101 runs more required in 84 deliveries. 7 run coming off from that last over. Now end of power play. The score is 48. We have a bowling change from Big Sports end. Aditya with his second over now. He gave away 15 runs in his last over. Was a very expensive over. Praveen is on strike. Batting on 9 after facing 6 deliveries. So as we said earlier, this Big Cricket League is organized by Big Sports and 12th Khiladi, a great platform for the corporate cricket players and young emerging cricketers. The best part was the participant in this selection process were from the age of 18 to 49, and few selected players are now playing the selection camp cricket league in Bangalore. The first selection camp already happened in North India, and now we are in Bangalore. So the next over, Aditya to Aryan Praveen, will be interesting to see how this match progress. Oh, this is a nice shot. Direct hit would have made some difference. That ball hitting on middle of the bat, there was a cracking sound. Samarth is back on strike. Aryan Praveen playing a standby role right now. Samarth is taking a charge for this inning. Dancing down the wicket, topish, and they're going for second run and chance for run out, and no, they completed 2 runs easily. 50 runs completed for Team D, and the score is moved to 51 for the loss of 1 wicket. Samarth batting on 22, Aryan batting on 10. This Aditya's over is also turning out to be little expensive. 2 balls, 3 runs so far. Coming down the wicket, ball is in the air, falling short of the fielder at long on. First time we are seeing both the batters are left-handers at the crease, and Aryan Praveen is on strike now. Aditya back to bowling mark, ready for the fourth delivery of his over. Short pitch delivery pulled away into the gaps. Ball will race to the boundary for 4 runs. Excellent grounded shot, middle of the bat. 4 runs to Aryan Praveen. He moves on to 14 in just 8 deliveries. Score moves on to 56. 93 more runs needed in 80 deliveries. That was cut away. He was trying to cut away that into the gully region and nicely fielded out there.
8 runs so far from this over after 1.5 overs. 23 runs given by Aditya, and this time Aryan Praveen facing Aditya. Oh, that was nicely sliced away to fine leg for 1 run. End of the over. After 7 overs, score moves on to 57. Aryan batting on 15 and Samarth batting on 23. The partnership is building up. 35 runs partnership in 24 deliveries. So Aryan Praveen retains the strike with that single on the last delivery. And we have Thermalingam, the bowling change. Thermalingam carries a very typical action of Muthaiya Muralidharan. It is delight to see when he bowls. He exactly knows how to restrict runs for his team, keeping that line and length tight. Bowling round the wicket to Aryan Praveen. Thermalingam with the first delivery. That's a good ball by Thermalingam. He pushed the batsman onto the back foot, and there was no room for Aryan Praveen to go for any good shot on that delivery. Thermasina ready with the second delivery to Aryan Praveen. Oh, it's nicely sliced away. Chance of a run out if the direct hit is there. Easily completing that single. Excellent call by Aryan Praveen. He moves on to 16. Now Samarth is on strike. Dharmalingam to Samarth. Score moves on to 58. 91 more runs needed in 76 deliveries. Oh, that's a quite orthodox shot from Samarth. Ball is racing to the boundary line, and ball wins the race. 4 runs. 87 more runs needed now in 75 deliveries. Score moves on to 62. The partnership already crossed 40 runs in 27 deliveries. After loss of 1 wicket, Team D is on 62. Thermalingam with the next delivery. Down the leg side, an excellent shot. Nice pickup shot here. He exactly knew where the fielder was and hitting through the line, and ball reaching to the boundary line for 4 runs. Back to back boundaries here for Samarth. He moves on to 31. 9 runs coming from that over. That's teared away to the point, and 1 run. Nice call by Aryan Praveen. An excellent response from Samarth. So required run rate is just about under 7 now, and current run rate is 8.55. Thermalingam to Aryan.
Dancing down the wicket, played straight, ball racing to the boundary line. Will be interesting to see, and it is cut up on the boundary line by long on fielder. Two more runs added. End of the over. Score is 69 for 1 run after 8 overs. And the next proceedings for this match will come in Hindi. सो नए गेंदबाज, बॉलिंग में परिवर्तन। नए गेंदबाज है दैविक नायक। मैच का छोटा सा रिकैप आप सभी के लिए। टीम सी ने 148 रन बनाए, 149 रन का लक्ष्य रखा है टीम डी के लिए। और टीम डी की अच्छी शुरुआत, यहाँ पर सिर्फ एक विकेट खोया है और 69 रन बनाए यहाँ पे एक विकेट के नुकसान पर। समर्थ खेल रहे 32 रन बनाकर और आर्यन प्रवीण 18 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दे रहे हैं। गेंद दैविक नायक के हाथ में, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी थी दैविक नायक ने कल। देखना है आज उनका प्रदर्शन कैसे रहता है। समर्थ स्ट्राइक पे, दैविक नायक तैयार। और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और यहाँ पे बोल्ड हो गए समर्थ। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई, अंदर आई, सीधे स्टंप पे जाके लगी और यहाँ पे बोल्ड हो गए समर्थ। अपने निजी स्कोर 32 रन बनाकर आउट हो गए हैं। 4 चौके लगाए उन्होंने अपनी 32 रन की इनिंग में। दूसरी विकेट का पतन यहां पर टीम डी के लिए। नायक ने अपनी पहली गेंद पर विकेट चटकाया यहां पे समर्थ का। नए बल्लेबाज क्रीज पर। आर्यन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब अपने इनिंग को आगे लेके जाते की। 80 रनों की जरूरत 71 गेंदों में। नए बल्लेबाज अब्दुल रहमान। 9वें ओवर की दूसरी गेंद करेंगे दैविक नायक। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर अच्छे से खेला उसे अब्दुल रहमान ने। गेंद सीधे पॉइंट की दिशा में गई। अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं। और इस बार फिर से बोल्ड कर दिया। इनसाइड एज लगी, गेंद सीधी बल्ले को लग के सीधे स्टंप पर जाकर लगी। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर। बैट के निचले हिस्से में गेंद लगी और सीधे जाके स्टंप पे टकराई। तीसरी विकेट का पतन यहाँ पे टीम डी के लिए। अब्दुल रहमान बिना कोई रन बनाए पेविलियन में लौटते हुए। बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई, अंदर आई, बैट का बाहरी किनारा लिया और सीधे, माफ कीजिए, बैट का अंदरूनी किनारा लिया और सीधे जाके स्टंप पे लगी। और यहां पर एक और विकेट का पतन अब्दुल रहमान के रूप में। खाता भी नहीं खोल पाए अपना। और नए बल्लेबाज आए हैं नवीन। और यहाँ ये मैच
टीम सी की गिरफ्त में आता हुआ 3 विकेट निकाल चुके हैं। दैविक नायक की अगली गेंद नवीन को, और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थोड़ी नीची रही। बैट्समैन गेंद तक पहुंच नहीं पाए, स्क्वायर कट करना चाहते थे। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में। 4 गेंदें हो चुकी है और यहाँ पे अच्छे से खेल दिया। 5 गेंदें हो चुकी है, कोई रन नहीं इस ओवर में। 2 विकेट चटकाई यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दैविक नायक द्वारा। और ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद करी और ये अंपायर का वाइड का इशारा। स्कोर हो गया है 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर की आखिरी गेंद, और ये फिर से एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बैटर वेट करते रहे कि शायद अंपायर वाइड का इशारा करेंगे, लेकिन ये गेंद काफी अच्छे से सीधी निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति का इशारा। 9 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में सिर्फ 1 रन आया है और यहाँ पे आर्यन प्रवीण को नवीन के साथ मिलकर एक साझेदारी बनानी पड़ेगी जो उनको जीत के करीब लेके जा सके। काफ़ी माहिर है, 17 साल के खिलाड़ी है और वो काफ़ी माहिर है अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए। जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे अच्छे से खेलना चाहते हैं और खेल सकते हैं। काफ़ी प्रतिभा है उनमें। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। हालांकि आज बॉलिंग में उनका इतना प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, काफ़ी महंगे साबित हुए। लेकिन यहाँ पर अपने बॉलिंग में जो गलतियां हुई उसकी भरपाई करते हुए अपनी बैट से, अपने बल्ले से 79 रन चाहिए 66 गेंदों में। थर्मलिंगम फिर से बाहर आके खेलने की कोशिश करी और खेल दिया इसे कवर्स की दिशा में, डीप कवर पे। बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिला यहाँ पर। नवीन 3 बॉल खेल चुके हैं, खाता नहीं खोला है अभी तक। सामना करेंगे धर्मलिंगम का। धर्मलिंगम की जो स्टाइल है वो काफ़ी मिलती जुलती है मुथैया मुरलीधरन से। बहुत ही बड़े गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन, 800 से ज़्यादा विकेट। हाँ बोलना भाई। सोने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पर मोहम्मद फ़हीम द्वारा।
माफ कीजिए, अगले बल्लेबाज आए थे मोहम्मद फहीम। और यहाँ पे पैड पे गेंद लगी। अपील अब एलबीडब्ल्यू की। गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, अंपायर का नॉट आउट का इशारा। थर्मलिंगम बहुत ही महंगे साबित हो रहे हैं। अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं। 21 रन दे चुके हैं अभी तक। और इसे हल्के से खेल दिया है। एक रन जरूर मिलेगा मोहम्मद फहीम को। ओवर की समाप्ति। 10 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 80 रन। 69 रन चाहिए अभी जीत के लिए 60 गेंदों में। 6.9 का औसत का की जरूरत। अगला ओवर दैविक नायक करेंगे। एक साइड से दैविक नायक रन्स को रोके जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि थर्मलिंगम की ओवर से दो लगातार चौके मिले टीम डी को। दैविक नायक पहली गेंद डॉट बॉल और खेल दिया है इसे कवच की दिशा में। बहुत ही बढ़िया शॉट। पहला रन ले चुके हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े यहां पर। स्कोर हो गया है 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 67 रनों की जरूरत 58 गेंदों में। और ये शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, गेंद तक पहुंच नहीं पाए। फुटवर्क की कमी यहाँ पे। अगर आप पैर नहीं हिलाओगे, आपका फुटवर्क नहीं होगा तो आप गेंद तक पहुंच नहीं पाओगे और शॉट खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। और उसी का फायदा उठाते हैं। बॉलर भी बैट्समैन को रीड करता है कि उसका फुटवर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसी दिशा में वो गेंदबाजी करता है। बहुत ही अच्छी सूझबूझ दिखाने की जरूरत यहाँ पे। और दैविक नायक वही सूझबूझ दिखाते हुए गेंद को बैट्समैन से थोड़ा दूर रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैट्समैन बॉल तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की। सिर्फ 2 रन आए अभी तक इस ओवर से। और ये ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद। अंपायर का वाइड का इशारा। आखिरी गेंद इस ओवर की। और फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और ये अंपायर का ओवर का इशारा। 11 ओवरों के बाद स्कोर हो गया है 83 रन। आर्यन प्रवीण खेल रहे 19 रन बनाकर। मोहम्मद फहीम 11 रन बनाकर खेल रहे। 66 रनों की जरूरत 54 गेंदों में। 7.55 की रन रेट से खेल रहे हैं और आस्किंग रन रेट है 7.33। और यहाँ आखिरी 9 ओवर में थोड़े गेयर चेंज करने की ज़रूरत। और आर्यन प्रवीण बहुत से जानते हैं कि अपनी गेम को कैसे आगे बढ़ाना है, कौन से वक्त पे बड़े शॉट खेलने की कोशिश करनी है। बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ही अच्छी समझ दिखा रहे हैं। और फिर से आ गए धर्मलिंगम गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। 2 ओवर में 22 रन दिए हैं और अब उनका तीसरा ओवर। अपनी गेंद पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश धर्मलिंगम की और बैट्समैन को बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर किया यहाँ पे।
बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया दो गेंदे, अच्छा कमबैक कर रहे हैं थर्मलिंगम यहाँ पर। दो डॉट बॉल गेंदे और इसे बैकफुट पे आके पंच किया मिड ऑन की दिशा में। एक रन जरूर मिलेगा आर्यन को। पहुंच गए हैं 20 रन पर। मोहम्मद फहीम 11 रन पर खेल रहे हैं। 65 रनों की जरूरत 51 गेंदों में। थर्मलिंगम अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस ओवर में सिर्फ एक रन दिया है 3 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया कंट्रोल भरी गेंदबाजी यहाँ पर थर्मलिंगम द्वारा। और ये बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई, अंदर आई और एक रन यहाँ पर मोहम्मद फहीम को। आर्यन प्रवीण फिर से स्ट्राइक पर। 64 रनों की जरूरत 50 गेंदों में। थर्मलिंगम अपनी अगली गेंद लेकर आर्यन प्रवीण के लिए और आगे के खेलने की कोशिश और ये गैप में खेल दिया है। यहाँ पर मिसफील्ड हुई वहां पे कवर सीजन में, उसे कट कर दिया है वहां पे। बढ़िया फील्डिंग, 2 रन मिले यहाँ पे आर्यन प्रवीण को। बढ़िया शॉट खेला था, कवर्स में मिसफील्ड हुई और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई वहां पे लॉन्ग ऑफ से दौड़ते हुए फील्डर ने आके उसे रोका और सिर्फ 2 रन मिले यहाँ पे। आखिरी गेंद इस ओवर की और लेग स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर आके इसे खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट आर्यन द्वारा, बहुत ही बढ़िया शॉट। ओवर की समाप्ति 51 रनों के बाद स्कोर हो गया है। 12 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और मैच का आगे का हाल अंग्रेजी में। So the score moves on to 91 runs for the loss of 3 wickets in 12 overs. Aryan Praveen batting on 26, Mohammad Fahim batting on 12. 58 more runs required in 48 balls. Still the difference of 10 balls between ball and runs. Still the difference of 10 between balls and required runs. The required run rate is now 7.25 and current run rate is 7.58. That is their batting at. This target, this match is looking very good right now. The partnership of 22 in 21 deliveries between Mohammad Fahim and Aryan Praveen. Now bowling change, new bowler we have here, Madhusudan. Mohammad Fahim is on strike. We are seeing 3 fielders on the off side in 30-yard circle and 1 fielder on the leg side on the mid wicket in 30-yard circle and one short fine leg, and rest all we are seeing on the boundary. Now that mid wicket fielder coming much closer than earlier. So Madhusudan is ready. Mohammad Fahim ready to face the ball. 58 more runs required in 48 deliveries. That was nicely driven through long off and 1 run to Mohammad Fahim. Now Mohammad Fahim exactly knows that Aryan Praveen is trying to take a risk and make some big shots. He's rotating the strike, giving more strike to Aryan Praveen so that he can attack the bowlers. Pulled away. Two more runs to Aryan Praveen.
Score moves on to 94 runs for the loss of 3 wickets. 55 or more runs needed in 46 deliveries. Aryan Praveen is taking charge of this chase, batting on 28 in 20 deliveries. That's nicely driven, fielded by bowler himself. Some few big shots needed by Aryan Praveen here. Driven through the covers, one more run added. Aryan Praveen showing some sensible cricket here. Wherever there is a chance of singles and doubles, he will take that, and when he finds the loose delivery, he will go for that big shot for the four boundary. Playing a pinch hitter role here. Madhusudan to Mohammad Faim. 4 runs from this over so far. Short pitch delivery pulled away. No protection at all in that region. Ball races to the boundary for 4 runs. Score moves on to 98. Sorry, 99, and 50 more runs needed in 43 deliveries. That was a nice punch shot on the front foot. Nicely cut away also well. Great fielding on the boundary line. 2 more runs to Mohammad Faim. End of the over. Score crosses 100 runs mark. 101 for 3 wickets after 13 overs. 48 more runs required in 42 balls. Aryan Praveen batting on 29 and Mohammad Faim giving a great stand to him with 19 runs. Partnership between both of them is 32 in 27 deliveries. So after 13 overs, the score is on 101 for 3 wickets. 48 more runs needed in 42 deliveries. A Dings break here on the ground.
दिया सर थोड़ा और नहीं थोड़ा और थोड़ा क्लियर हो जाएगा so over we have starting with Devik Nayak from the other end and that was a nice cracking shot that pulled away and ball racing to the boundary line for 4 runs. Excellent shot by Aryan Praveen. And here the score crosses 100 marks, 106 runs for the loss of 3 wickets. 43 more runs needed in 42 deliveries. So umpires wants to check the no ball on the waist height. And it's a no ball called by umpire. So it will be a free hit for Team D and for Aryan Praveen. This match is officiated by Prakash Gandhi. Dancing down the wicket. Excellent shot here. Ball racing to the boundary line. 4 runs. Back to back boundaries for Aryan. "39 more runs needed in 41 deliveries now. Back to back boundaries for Aryan. Excellent use of that free hit. That was excellent delivery by Devik Nayak. Aryan Praveen was watchful, left the delivery straight in the keeper's hand. No need to take a risk. 9 runs are already in this over. Full toss over fine leg. Ball racing to the boundary line. 4 runs. One more no ball here. Free hit signal by umpire. On the back foot, punched towards long on for 1 run. 33 more runs required from 39 deliveries. Mohammad Fahim on strike. He'll be facing Devik Nayak. That was excellent delivery by Devik. In the air, into the gap, will be and cut off on the deep cover region. 2 more runs added to the tally. Now last delivery of this over. 31 more runs required in 37 deliveries.
An excellent shot here by Mohammad Fahim. Nice pickup shot here towards mid wicket for 4 runs. Quite attacking batting by both the batters now. 27 more needed in 36 ball. End of 14 overs. Score moves on to 122 for the loss of 3 wickets. RN is batting on 42, and this partnership is 50 plus. The first 50 plus partnership for the day in just 35 deliveries. Mohammad Fahim batting on 25 and RN Praveen batting on 42. RN Praveen, as I said earlier, he exactly knows how to build his innings. He's batting on 42. So at the end of 14 overs, score is 122 for 3 wickets. 27 more needed in 30 deliveries. Azhar then Alfan. Yeah, I'm ready. So we have a bowling change here. Nayan with the new fresh over. 27 more runs needed in 36 deliveries. Aryan Praveen is on strike on 42. Excellent partnership of 53 in just 35 balls between Muhammad Fahim and Aryan Praveen. And that's driven away to mid wicket and mid on region for 1 run. He will have to be satisfied with that single. 26 more needed in 35 deliveries. Mohammad Fahim is on strike now. Score moves on to 123 for 3 in 14.1 overs. An excellent partnership between these two guys. The victory in the sight of Team D right now. But this game, cricket, is of total uncertainties and you never know what can happen next. Trying to play a big shot, no time at all, lack of footwork, not reaching it to the ball. 26 more runs needed.
Nayan to Mohammad Faim, trying to go for a big shot again. Hits swaps on pad. No appeal for an LBW. Looks like that ball going down the leg side. Ball is in the air. Nicely cut away here. Excellent fielding on the boundary line. Only one run. Nayan to Mohammad Faim. Hit. Ball is in the air. Aerial shot. Excellently cut away on the long off region. One more run added to the tally. 23 more runs needed in 31 deliveries. 126 for 3 is the score. And last ball for this over by Nayan to Aryan Praveen. Aryan Praveen is batting on 44. Sliced away to the point. No run. End of the over. Will be interesting to see the next bowling change. Taivik Nayak has already bowled his 3 overs quota. And Ganesh also bowled his 3 overs quota. Thermalingam bowled 3 overs, very expensive, 30 runs given. Ganesh in 3 overs, 19 runs given, quite economical. And Taivik Nayak in 3 overs he gave away 25 runs. Initially he was very economical, but in the lane turned out to be very expensive. But he claimed 2 wickets. So Mohammad Faim is on strike, and new bowler is Irshad Ali. 23 more runs needed in 30 deliveries. So fresh over by Irshad Ali, a new bowler for Team C. And that's excellent cracking shot. Nicely cut away on the boundary line. Only one run. Certainly saved a boundary there. 22 more runs needed in 29 deliveries for Team D. Aryan Praveen batting on 44. Will be interesting to see if he can get through his 50 here. And it's nice to see the lights are getting on at Coxpix Crick-based cricket ground. It's always interesting to see the match under floodlights. That's nicely driven, but will be cut away from the boundary. Only one run. Aryan Praveen goes for first run very fast. This time he was very fast on his first run and was looking for second. But Mohammad Faim was not interested.
21 more runs needed in 28 deliveries. Hit to the line, straightly driven, nicely cut away on the boundary line. Only one run again. Was that shot was not that powerful that could reach the boundary. Nicely cut away the boundary line. Three deliveries, three runs so far in this over. Now 20 runs needed in 27 deliveries for Team D. The victory is into near sight for Team D here. That pulled away by Aryan. Looking for second, and he will look for second. He is taken second run very easily. He moves on to 47. Now 18 more runs required in 26 deliveries. Arshad Ali, sorry, Irshad Ali with the next delivery to Aryan. Oh, out of the off stump delivery called wide by umpire. One more extra run to the tally. Score moves on to 132 for the loss of 3 wickets. Partnership was 63 between these two batters. In the air, aerial shot in no man's land. Ball will race away to the boundary for 4 runs. And here, 50 runs completed for Aryan Praveen. Excellent build inning by him. 136 runs for 3. Excellent shot by Aryan Praveen there, completing his 50. Partnership is was 67. Again driven through the mid off for 1 run. End of the over. End of the over. 12 more runs needed in 24 deliveries. And here Aryan Praveen getting retired out. Excellent batting performance by Aryan Praveen getting retired out. Just 17-year-old boy, he exactly know how to build his innings. After scoring 51, he's getting retired out here. 12 more runs needed in 24 deliveries. Mohammad Fahim still on strike on 29. Some phone is ringing since that time. There must be some emergency. Someone can pick up. New bowler Nayan. New batsman Mohammad Mazir. Try to cut away to fine leg. Excellent fielding there by short fine leg fielder.
Nayan to Mohammad Mazhar. Down the leg side again. Ball racing to the boundary line. We'll have to wait for the signal from the umpire. Long chase for the fielder. And 4 runs given by umpire. 8 more runs needed for Team D to win this match in 22 deliveries. Nayan to Mohammad Mazhar. On the back foot, punch through the covers for 1 run. 7 more needed now from 21 deliveries. Required run rate is just about 2 runs per over. They have scored these runs at 8.61 runs per over. In the air, fielder underneath, and this will be taken an excellent catch on the boundary line. Mohammad Fahim out on 29. Fourth wicket down for Team D. New batter Siddiq Arafat is on crease after the wicket fall down of Mohammad Fahim on 29 individual score. He scored 4 boundaries in that. Strike rate of 107. 7 more runs needed for Team D to win this match in 20 deliveries. Nicely cut away here to the point for 1 run. 6 more runs needed to win this match in 19 deliveries. Nayan is coming up with his last delivery of his second over. 8 bowlers used so far by Team C, and victory is in the sight of Team D. 6 more runs needed, and that's a nice cracking shot here. And ball will race to the boundary for 4 runs. So 2 more runs needed. End of 17 overs. Score is on 147 for 4 wickets. 2 more runs needed to win this match in 18 deliveries for Team D. So 2 more runs needed
Nicely driven. He will get 1 run for it. Scores are level now. Irshad Ali bowling to Mohammad Mazhar. Only 1 run needed, and it's called wide. And here the match is won by Team D by 6 wickets.